अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से, जी हाँ, फिर से बाइक की टॉप स्पीड रन करने, जो कि ज़ीशान भाई करेंगे हो सकता है, बिकॉज और फिर से हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो देखा जाता है या तो आगरा एक्सप्रेस वे या विल सी विच रोड, कॉज आगरा एक्सप्रेस वे पे इस वक्त आचार संहिता चली लखनऊ में, तो लखनऊ में क्या इट्स एवरीवेयर एंड मे भी हो सकता है इस बार पुलिस वाला अलाउ ना करें, जो सीगेट बाइक वाला। यार तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि टेस्ट राइड वगैरह हो जाए आराम से एवरीथिंग। एंड देयर हैव बीन क्वाइट फ्यू कमेंट्स कि हाउ इज़ द कंफर्ट ऑफ द बाइक एंड एवरीथिंग। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैं जनरली चीज़ें भूल जाता हूँ, तो वी विल चेक दैट थिंग। एंड इफ़ यू गाइस हैवंट नोटिस, बहुत लोगों ने बोला था भाई बाइक करते हो ग्लव्स क्यों नहीं लगाए, ग्लव्स हो गए थे इसलिए मैंने नहीं लगाया था। बट राइट नाउ आई हैव माई ग्लव्स, इट्स हियर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम वेयरिंग इट। स्काइको MC10 or MC9, I'm not sure. I'll put it in the description down below. So let's head towards the exhaust. After changing the exhaust, and the review, speed run and everything, comfort, its vibration. Okay, so let's head. So now we have Interceptor in our hands, and okay, side is on करके an awesome sound. Yeah, so guys, the ride quality was very comfortable. The handlebar wasn't shaking at all. There was no shaky motion in the handlebars or so. And just ignore that background sound at my place too, because I'm recording it on my laptop. And well, the curve is nice, as you can see. I was shocked to see the GoPro footage. It's really nice actually. The sun was in front of me, but still it managed to do a great job. And you guys were asking about the handlebar. It's not shaking at all at low speeds, at least. At high speed it shakes a little bit. It's controllable, you can bear it. It's bearable. And hi, thumbs up guys, happy safe riding. Well, there was sort of disturbance in the audio due to background of me. Well guys, now we'll be speeding up, and so here is the throttle. I've already pulled the throttle, and I'll be going with the 5th and the 6th gear.
सो गाइस मे बी ऑडियो क्लियर नहीं थी मेरी पिछले बार वाले में. सो हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि या हैंडल ग्रिप्स आर कंफर्टेबल. दे आर श्योरली कंफर्टेबल एज हेल. एज हेल नहीं, दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड एक्चुअली. और बाइक में ज़रा सा भी मतलब वाइब्रेशन नहीं है. मतलब सीरियसली देयर इज़ नो वाइब्रेशन इन द बाइक और व्हाटसोएवर. देयर इज़ नो सच इश्यूज इन द बाइक. You can hit 160, 150 in just a matter of seconds. It's that quick. So मैं एक और बार इसका रन तो करेंगे, but before that we'll be doing like बस बताना चाह रहा था so that you guys should be safe on the roads and just be safe guys. Don't overspeed because as the boat said. Yeah, so guys, let's start the test run of top speed again from the first gear. This was the first gear, now it's the second gear. Now that pickup is huge, it's third gear. Fourth gear guys. Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are Actually stop. Sir, how was the ride? बढ़िया. लेकिन सर एक बात पूछना चाहूँगा. हेलमेट तो ऐसे भाई. और अरे नहीं, हेलमेट है मेरे पास. ये नहीं क्या करिए भाई. क्योंकि हमारा चैनल एक्चुअली वो वाली मेरी बाइक है, वो MSH राइडर करके. सो जी लखनऊ से ही हूँ मैं. आप चाहो तो मेरा नंबर ले लो एंड भाई हेलमेट लगा के इस पे आइए. यही टोल पे मेरे कज़न है काम. अच्छा. नहीं तो फिर अगर बिना हेलमेट के तो थोड़ा स्लो चलाए करिए. क्या नाम बताया? MSH RYDR. एक मिनट.
ये देखिए RYDR, हाँ ये आ गया। अब अभी नया शुरू किया। हाँ अभी नया शुरू किया, अभी 2 महीना हुआ होगा मुश्किल से। तो आयु शर्मा हाँ हाँ हाँ, फ्रेंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो कभी नंबर आप अपना दे दीजिए, कभी आपकी बाइक रिव्यू करेंगे। बताइए भाई। 8855 लिख नाम क्या है आपका? सुजीत शर्मा। सुजीत कुलदीप। सुजीत शर्मा। सुजीत शर्मा। सुजीत शर्मा। रोड पे गिरे थे, गिरते हुए थे। अरे इधर छोटू छोटू, हाँ देख इसका बैग, हेलमेट, गाड़ी कहाँ सब खड़ा है। यहीं ले आओ। यहाँ पे अभी मत लिया, घर वालों को आने दे। नहीं घर वाले आ जाए, घर वाले आ जाए तो दे दिया जाएगा। पता ना क्या है उसमें, क्या नहीं है ना, कोई नहीं है भाई। को देखो देखो मोबाइल इसी का है, पहचान रहा है ना। एकदम पहचाने पिन कोड डालिए। as you guys must have saw, तो ये बंदा गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था whatsoever. Now he is fine and there is no such injuries to him apart from a few minor scratches on his left and right hands and on his right shoulder and on his nose and his chin, upper part of the chin below the lower lips. So as far as I described, this is what happened. Well guys, it seems that this guy wasn't wearing any helmet, and as earlier I shopped an Harley Davidson guy who wasn't wearing a helmet, and he was on an expressway, and guess what, and on expressway this thing happens. I don't think so. At even 80 km/h speed, maybe you might not be safe. This guy was just standing actually, as per the public present there. They told us कि ये बंदा खाली खड़ा था वहाँ पे और किसी बाइक वाले ने मार दिया और ये गिर पड़ा था। मेरे को लगता है गिर गया तो इसके सर में चोट वगैरह आ गई थी उस वजह से। खड़ा क्या था, मतलब थोड़ा मोड़ा चल रहा होगा, काफ़ी जाम रहता है इस रोड पे। तो हालांकि कहते हैं ही इज़ फाइन नाउ, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, देयर इज़ नो major casualty, so this person was fine. And this is Saf from MSH Riders. Do subscribe guys if you haven't, and press the bell icon, and the subscription button will be present on your left side, bottom left side. If you're watching on desktop version, it is on the left side. It will be available in the entire video. Kindly press that subscribe button if you haven't subscribed yet. It's easy guys, just hit that subscribe and you get subscribed to my channel. And in the coming days I am thinking to do giveaways of few products, so stay tuned guys, and this is Saf signing off. Bye bye.